Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in plant breeding. Starting with the first one, that is recurrent parent. इसको recipient parent भी बोलते हैं. मतलब ऐसा parent जिसमें हम लोग को कोई एक character को change करना है और उसको हम लोग बार बार use करते हैं back crossing में, इसीलिए उसको recurrent parent बोलते हैं. Then recurrent selection. In a cross-pollinated population, scheme of selection, that is on the basis of phenotype or progeny test, followed by intermating, मतलब कि हर एक combination में of the selected plant of their self progeny to produce the population for the next cycle of selection. More than one cycle of selection practiced. Recurrent मतलब बार बार होना. तो जब हम लोग बार बार selection कर रहे हैं in simple terms उसको बोलते हैं. Then register seed. ये फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी होता है. ये इंडिया में यूज नहीं होता, ये अब्रॉड में यूज होता है. Then release of a variety. The recommendation by the Central Subcommittee on Crop Standards and Release of Variety or State Variety Release Committee of an approved strain of a crop species for commercial cultivation in the whole or part of the country. मतलब स्टेट या सेंट्रल जो है वो बहुत सारे टेस्ट करके आईवीटी होता है और भी टेस्ट होता है, रीजनल होता है, स्टेशन टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट करके एक क्रॉप के एक स्ट्रेन को अप्रूव करती है कि वो एक पार्ट ऑफ द कंट्री में या फिर पूरे कंट्री में ग्रो कराया जा सकता है कमर्शियली, मतलब उसे बेचा जा सकता है. तो उस पूरे स्टेप्स को बोलते हैं release of a variety. Then reporter gene, a gene which produces a product of phenotype that can be easily detected through simple tests. Then reproduction, पता है production of new generation of individual या progeny bisexual या asexual means. Then repulsion phase क्या होता है? Linkage between the dominant allele of a gene with the recessive allele of another gene. मतलब capital A small b इसका लिंकेज होगा तो उसको हम लोग रिपल्शन बोलते हैं. Then resistance, a form of disease reaction, ability of a host strain to resist or even prevent the production of disease symptom by a pathogen due to a gene of resistance. मतलब कि वो उससे resistant हो गया, उसको उस disease से फर्क नहीं पड़ रहा है. That's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.